In our previous session, we had started the section 6, which is residential status as per the Income Tax Act 1961, right? Today, we are continuing with this session only, and then followed by we will start with the salary chapter. I mean, if the time allows, obviously, we are going to start with our salary chapter, which is income under the head salary. Let's revise whatever we have studied so far in the residential status. So, as I told you, that when it comes to section 6, either a person would be considered as resident or a non-resident. Okay, let's talk about an individual. An individual can either be a resident or non-resident. Okay, once he is declared as resident, then we will understand. I mean, we will identify whether he is ROR or RNOR. ROR stands for resident, ordinary resident, and RNOR stands for resident not ordinary resident. So that means if I repeat the same in Hindi, it means कि मुझे अगर इंडिविजुअल देखना है, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है. कैसे देखेंगे? ऑब्वियसली उसकी कंडीशंस देखेंगे, रेजिडेंट की वो फुलफिल कर रहा है या नहीं. अगर वो नहीं फुलफिल करता तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा. जैसे ही वो पर्सन रेजिडेंट मेरा डिक्लेयर हो गया, देन आई विल डू, और आई वुड से डू सर्टेन के through we will decide whether he is ROR or RNOR. What is why it is required for me to define whether an individual is ROR and RNOR? Why do we need to do the same? Something which we will understand in today's session itself. Okay. As I told you that there are two conditions for residential status in case of an individual. The condition number 1 says that if there is an individual who stays in India for 182 days or more, if there is an individual who stays in India for 182 days or more, in that case, he will be considered as resident of India. Okay, in that case, he will be considered as resident of India. The condition number 2 says that if his stay is 60 days or more, 60 days or more means say 60 to 181 days, because 182 days we are going to follow this condition number 1 only, right? So if his stay is in India is say 60 days till 181 days, and in the last 4 years, if his stay is 365 days or more, then still in that case, he will be considered as resident of India. These are the two conditions which we have covered in our previous sessions. We also have understood it through some examples which we have taken up in our previous session, right? Now, so let's solve these questions. Okay, first. Mr. Ankit, an Indian citizen, stays in India for the whole financial year. Determine his residential status. Please tell me. He is an Indian citizen. He stays in India for the whole financial year. What should be the residential status in this case? Resident. Obviously, for the whole financial year means 365 days he was in India, right? So, therefore, he is considered as resident only. Now, let's talk about this case. Miss Sara, a foreign national, comes to India for the first time on 1st September 2023. He stays in India till 31st March 2024. You need to determine her residential status. Please tell me, what would be her residential status? How many number of days are here in this case? Her stay in India for? He is a resident of India. He is resident of India. Kaise? Because we will add all the number of days. Yes. From September. So September 30 days, October 31, November 30, 31, 31, like this. For Feb 24, we will consider 29 days. Okay. And if you add the same, you will find that she was residing in India for more than 182 days. And if she is residing in India for more than 182 days, so that means she is resident of India. Yes. Let's talk about this case 3. Let me delete the answers because I am wondering if you are seeing these answers and then responding. So just give me a second because we have not solved these questions. So let me delete the answers. I request every one of you to please solve this question. Tell me whether Mr. Raj is a resident of India or not, and how many number of days. You need to calculate the number of days. Please solve this question. Please tell me the number of days. 185. What about others? Sudeep, Jitendra, Praveen,
Sumit, Shreya, Govind, Devanshi. I'm not getting any of your answers. आज मन नहीं है क्या आप लोगों का पढ़ने का? नहीं मैम, कैलकुलेट कर रहे हैं मैम. चलो कैलकुलेट करो, बताओ. Kelly is saying 232 days. Sumit, Govind, they are saying 201. Anuj is 186. 233 days. Okay. I'm not getting the same answers. जैसे एक सबका मैच करे वैसा नहीं है. कोई बात नहीं. Let's start. Mr. Raj entered India on 15th April. So if he has entered India on 15th April, can I say from 1st April to 14th April he was not in India? Yes ma'am. So if he was not in India, so can I say 30 minus 15 plus 1? मतलब मुझे 15 से लेकर 30 तक ही लेके जाना है. So it would be 16 days for the month of April. Then May was 31. June he was here. July he left India. So till 23rd July he was here in India. 23rd July. Okay. Then came back on October. So October का अक्टूबर में देखेंगे तो अगस्त में नहीं था, सितंबर में नहीं था. He came back on October. Came back on October. अक्टूबर में आया. So that means 31 days for the month of October. 8 तारीख को आया plus 1 because 8 को include करना है हमें. So it would be 24 days. November is 30 days. December is 31 days. Then Jan he was not here. February final return on 12th February 2024. So final return 29 minus 12 plus 1, which is 18 days plus 31 days. So if I solve the same, it would be February मैम 16 डे होगा ना, आई थिंक. 15 days कैसे होगा? वो आया 12 28 का 28 डेज का था. February 28 days का था. 29 days का था ना. तो 29 minus 12 plus 1. Yes ma'am, 29 days. 16, 31, 30, 23, 24, 33, 18. Okay, चलो. ठीक है, since the stay in India is for more than 182 days, so obviously he is resident of India. Okay. Now, let's talk about this question. Almost similar. You need to tell me the total number of stay in India and then accordingly we will determine the residency status. So please calculate her stay in India. Miss Priya stay in India. Purvya is saying 180. Some students are saying 180 and some saying 181. Let's see if we receive a few more answers. Some students are saying 150 days, 150, 151. Chaliye, we are starting with our solution now. Okay. Miss Priya movements for financial year 23-24. She left India on 17th May 2023. So if she left India on 17th May 2023, can I say or in the month of April she was in India? India में होगी तभी तो फोटो जाएगी ना. Yes sir. For the month of May, she was in India till 17th of May. Then she came back on August. July. August is on 29th August. So 29, 30, 31. 3 days for the month of August. She was in India. Then again she went back on 3rd of November. So that means September. October she was in India. 3rd November she again went back. 3 days in the month of November she was in India. Then December 0. January she came back on 25th January. 25th January means 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 7 days for the month of January. If you're not able to solve it like this, then 31 minus 25 when she came back plus 1. Okay, plus. For the month of February, she was here for the whole day, like whole year. 29 days in the month of February. 24. If say it is 25, February 25 or February 23, then we will consider it as 28 days only. And 31st March. So now this would be 50, 80, 180 plus 34 plus 181 days is the answer. So since she was residing in India for exactly 181 days, so therefore she is non-resident.
Are you getting my point? Is this clear? But let me tell you, when it comes to this individual, okay, first is condition 1. Condition 1 says that the stay in India should be 182 days or more. And condition number 2 says 60 days or more plus in last 4 years 365 days or more. Now, do you think, obviously she is residing in India for 181 days, right? But since we don't have any information available for this condition number 2, that is the reason I have considered her as non-resident. Are you getting my point? No point related to the previous years are given. So that is the reason we have considered her as non-resident. Okay. Now I told you one more thing, that in case of residential status, in case of an individual, you need to check two conditions. Either condition number 1 or condition number 2 needs to be satisfied. The condition number 1 says that if stay in India should is 182 days or more. This is your step number 1 which you need to follow. Then you need to check your step number 2. Step number 2 is basically the exception point to this condition number 2. It is for a person who leaves India. A person who leaves India. So who would be that person? He should be an individual who is a citizen of India. He should be an individual who is a citizen of India and who leaves India. Why? For the purpose of employment outside India as a crew member of the Indian ship. In that case, this condition number 2 is not applicable. Only condition number 1 would be applicable. So आपको क्या करना है? Repeating the same in हिंदी. आपको सबसे पहले अपना स्टेप नंबर 1 कि मैं इंडिया में कितने दिन रहा हूँ, 180 डेज और मोर रहा, तो उसी से आप रेजिडेंट बना दो. सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है. फिर आपको चेक करना है कि क्या आपने इंडिया छोड़कर गए थे. ये ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आप इंडिया छोड़कर गए थे. इंडिया छोड़कर गए थे तो क्यों गए थे? एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए गए थे, राइट? कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब इंडियन सिटीजन होना चाहिए. तो उस केस में मेरी कंडीशन नंबर 1 ही एप्लीकेबल है, 2 मेरी एप्लीकेबल नहीं होगी. 2 कौन सी है? 60 प्लस 365 डेज वाली. ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है. ओनली कंडीशन नंबर 1 इज एप्लीकेबल. ठीक है. विद दिस आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. टेल मी अबाउट द नंबर ऑफ डेज. कितना आएगा, क्या आएगा, और मुझे एक बार 2 से 3 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ. This is something which we have already solved in our previous session, but थोड़ा सा हो सकता है कुछ डिफरेंट हो या क्या हो, तो एक बार मुझे इसको सॉल्व करके बताओ. हाँ जी, स्टे इन इंडिया कितना होगा यहाँ पे इस केस पे? प्लीज कैलकुलेट. हाँ जी. So maximum answer is 112. Please tell me whether he is resident of India or non-resident. Resident of India. Okay. Everyone, please tell me whether he is non-resident or resident. Non-residents. He is non-resident. Sudeep. Ma'am, क्यों last financial year because of 360 day is available in India, na? That's what But the he is second condition. Indian citizen leaving India for the employment purpose. He is Indian citizen leaving India for the employment purpose. Okay, NRI condition में उसको टैक्स एप्लीकेबल करना पड़ेगा उस केस में. एग्जैक्टली. ठीक है. सबसे पहले तो चलो स्टे इन इंडिया देखते हैं कितना है. He was present in India on 1st April to 30th June. So April, May, June. Then he came on a visit to India. So April, May, June, July, August. 15 September he came back. 30 plus minus 15 plus 1. It would be 16 days for the month of September. October is 4 days. Then November. And another visit on 24th of December. So 31 minus 24 plus 1. 8 days for December. January is 15 days. 0, 0. So if I calculate the same, it would be 89 plus 23. 89 plus 23 would be 112. Okay. So now let me tell you. If we talk about an individual, there are two conditions which we need to check. The condition number 1 says his stay in India should be 182 days or more. This is your condition number 1, right? But in this case, it is 112. So obviously, we are not falling into this condition number 1. The condition number 2 talks about, this is your step 1. This should be your step 1 in your mind always.
This should be your step one in your mind always. Let's talk about condition number 2. It says 60 days plus in last 4 years. It is 365 days or more. Okay. 60 days or more or 365 days or more in the last 4 years. But before applying this condition number 2, I need to check the exceptions. And these exceptions are going to be my next step, which is my step number 2. It says if there's an individual who is a citizen of India and who leaves India for the purpose of employment, in that case, this condition number 2 is not applicable. Condition number 1 is applicable. ठीक है, इस केस में कंडीशन नंबर 1 ही एप्लीकेबल है, मींस 182 डेज वाली. अब नाउ बताओ कितने डेज होने चाहिए थे? 182. कितने हैं? 112. तो प्लीज टेल मी, ही वुड बी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया. डू यू एग्री? Yes, ma'am. Why? Because he's an Indian citizen leaving India for the purpose of employment. Okay? I hope it is clear to everyone of you. अगर मैम वो ट्रैवल पर्पस के लिए जाता तो उस केस में क्या कंसीडर होता? तो उस केस में हमारा 60 प्लस 365 वाला हो जाता है. वो सेम कंडीशन होता. यहाँ पे अगर जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट के लिए गया तो हमने इसको नॉन रेजिडेंट में कंसीडर कर दिया, करेक्ट? हाँ. बट अगर वो ट्रैवल पर्पस के लिए जाता, तो मैं स्टेप नंबर 2 में फॉलो ही नहीं करती. डू यू एग्री? तो मैं किस पे आती? मैं कंडीशन नंबर 2 जो मेन कंडीशन है उसी पे आती. समझ में आया? तो ही इज नॉन रेजिडेंट इन दिस केस. ठीक है. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. Now we are doing the new condition. If I want to identify the residential status of an individual, then there are two conditions. Condition number 1 is his stay in India should be 182 days or more. Condition number 2 is his stay in India 60 days or more, plus in the last 4 years 365 days or more. But there are few exceptions to it. Exception 1 is related to a person who leaves India. Person who is leaving India, मतलब जो जा रहा है उसके लिए मेरा एक exception 1 है. Exception 2 is for those persons who are coming back to India. Okay, who are for those persons who comes on a visit to India. Okay, now इसमें भी ना हमारे दो कैटेगरीज आ जाती है. तो सपोज अगर एक इंडिविजुअल है वो इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है. एक इंडिविजुअल है वो इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया में विजिट के लिए आता है. In that case, this condition number 2 is not applicable. Only condition number 1 would be applicable. That is 182 days वाली. तो देखो इंडिविजुअल है प्लस इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये उन्होंने ऐड कर दिया. किसी कोई पाकिस्तानी है डिवाइड इंडिया से बिलोंग करता है, अगर वो आ रहा है इंडिया में, तो इन दैट केस आपका कौन सा कंडीशन लगेगा? 182 days or more वाला. Are you getting my point? Is this clear? Yes, ma'am. In another scenario, it also says that if there is an individual who is an Indian citizen or person of Indian origin and जिसकी इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख से एक्सीड करे, ऐसे कौन से इंडिविजुअल हो सकते हैं? जैसे कनाडा में वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी चंडीगढ़ साइड पे है या दिल्ली साइड पे है, और वो जो प्रॉपर्टी है उन्होंने दे रखी है रेंट पर. ठीक है. अब वो आए इंडिया में विजिट करने के लिए, उनकी इनकम पूरे साल की 15 लाख से ज्यादा है. तो इस केस में हम लोग जो है जो लिमिट लेंगे वो होगा 120 days or more plus in the last 4 years 365 days or more. Is this clear? Yes, ma'am. But obviously without solving any question how we are going to consider the same. So पहले एक बार ये देखो, ये क्या है? मिस्टर कुमार है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, 112 डेज ही है जो भी आपने कैलकुलेट करा था. बट ये क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. डू यू थिंक मैं इस एक्सेप्शन में फॉलो करूंगी? नो. कंडीशन 2. यस. मैं क्यों नहीं करूंगी? बिकॉज इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. ठीक है. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को एक्सक्लूड किया गया है, तभी मैंने इसको रेड मार्क से फिर उसको स्ट्राइक ऑफ किया हुआ है. ये एक्सक्लूड है. ठीक है. नाउ सो आई होप इट इज क्लियर. तो इवन इफ इट इज 112 days, बट ऑब्वियसली इस केस में ये मेरा रेजिडेंट हो जाएगा जस्ट बिकॉज ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस क्लियर? यस मैम. अब आई रिक्वेस्ट एवरीवन ऑफ यू टू प्लीज कैलकुलेट दिस. एक बार मान के चलो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसका आप एक बार नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करो और उसके बाद फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं. सो आई एम गिविंग ऑल ऑफ यू 2 minutes ऑफ टाइम. प्लीज कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज एंड टेल मी व्हाट शुड बी द रेजिडेंशियल स्टेटस इन दिस केस. ओके. यस एवरीवन, हो गया सॉल्व? यस मैम. व्हाट आर द नंबर ऑफ, बेसिकली प्लीज टेल मी द स्टे इन इंडिया. 168 days.
सबका 168 days है. No, 167. Let's calculate. Some of the students are getting 168 as the answer and some 167. Okay. April 30 days. May 0. June 0. July 15 to August 20. He was in India. Okay. So July 16. So 31 minus 16 plus 1. 16 days in the month of July, right? Yes, ma'am. Okay, just give me a second. Hanji. So April, May, June, July. What about August? August is 20 days for in August, right? Then September he was abroad. October 5th till 5th October he was abroad from 6 to November 30. So it is basically like this. 31 minus 5 would he was in abroad plus 1. So it is basically my 27 days, right? 32 minus 5, which is 27 days, plus 30 days for the month of November. So I'm going to add the same 30 days for the month of November. Then December, whole December he was outside India. January, whole January he was outside India. Till 15th of Feb he was outside India, but from 16th Feb till 31st March he is in India. So when it comes to the, let's say the Feb month, so 29 days for the month of February minus 16 plus 1. So it would be 14 days for the month of Feb plus 31 days for the month of March, right? So it is 46, 66 plus 96. Okay, so it would be 96 plus 27 plus 14 plus 31. 168 days. Are you getting my point? Ma'am, one point here. Here in October month, you have calculated wrong. He was present in India on October 6th to 30th November. Yes. So it will be 31 minus 6 plus 1. यस मैम, अक्टूबर में 26 डेज होंगे अगर कैलकुलेट करें तो. अच्छा, तो आपके जो 31 minus 6 plus. Okay, Yeah. yes, correct. You're right. So it would be 26 days. So it is 167 days. So 167 days would be my answer. ठीक है? Now, अब देखो ध्यान से. So first of all, thank you so much for correcting this error. मैं आपको चेक करने के लिए मैंने गलती करी थी. Okay? ठीक है? तो 167 days हो गए हमारे. ठीक है? In the last 4 years, so let's see. Let's talk about Mr. Verma. Okay, Mr. Verma, condition 1 is stay in India should be 182 days or more. So obviously we are not able to maintain this condition. So no worries. We will go back to this condition number 2. And before this condition number 2, I have to check the exceptions whether he is basically comes on a visit to India or he is leaving India for the purpose of employment, etc. So in this case, as you can see, no condition is defined. So I mean, we will not fall into this. And also, it is not given whether he is Indian citizen or person of Indian origin. So we will not consider the exception part. We will consider only condition number 2, which is 60 days or more. Plus in last 4 years, 365 days or more. So 60 days or more, obviously 167 days is basically for condition number 2. And in the last 4 years, it is 792 days. Since we are able to manage this condition, we are satisfying this condition. Therefore, Mr. Verma would be a resident of India for financial year 23-24. Is that clear to everyone? I hope it is clear, right? Yes, ma'am. Okay, perfect. Now I request you to please solve this question. Please tell me whether he is resident, Miss Gupta, whether she is resident of India or not. I'm giving all of you 2 minutes of time. So let's see. Hanji, everyone. हो गया? He is non-resident. Why? Shall we solve this question? See. She is Miss Gupta. In order to determine the residential status, first I will check this condition number 1. And condition number 1 says that my stay in India should be
182 days or more. In this case, it is 121 days. So obviously, this condition number 1 is not satisfied. Then I will go to this condition number 2. Which is 60 days or more plus more than 365 days or more in last 4 years. But when it comes to this question now, obviously I will check the exception first. Exception 1. This exception is basically going to be my step 2. This is for those individuals who basically leaves India for the purpose of employment. Who leaves India for the purpose of employment. Now, please tell me, do you think I fall into this exception 1 category? क्या मैं exception 1 में fall करता हूँ? No, ma'am. No. So step number 2 also needs not to be followed. Let's go to this step number 3, which is exception 3. This is for a person where somebody comes on a visit to India. Somebody comes on a visit to India. And he should be individual plus Indian citizen plus person of Indian origin. Please tell me whether we fall into this step 3, exception 3. No, ma'am. Why? Because of the last financial year also, he's staying only 300 days only in India. So because of that. No, because nothing is given whether he is Indian citizen or what. No, yeah, Indian, not Indian, yeah, citizen. He's in a Yeah. So here it is not given whether he is Indian citizen or something. The person of Indian origin. That is the reason step number 3 is also not applicable. Okay. And if step 1, 2 or 3 is not applicable, then I will go back to step 4. Okay. This is step 4. My stay in India should be 60 days or more, which is 121 days in this case. Or in the last 4 years, it is 300 days. So obviously, this condition is not satisfied, right? Therefore, he would be considered as non-resident of India. Is this clear to every one of you? Yes, ma'am. He will be considered as non-resident of India. Now let's talk about resident. Okay, who are my deemed resident? I'm sharing my screen with all of you. Just give me a second. Deemed resident. Okay. Now, do you agree when it comes to residential status, it depends upon staying in India? Residential status, it depends upon stay in India. Do you agree? मेरा जो भी रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर है पूरा स्टे इन इंडिया पे डिपेंड करता है. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? प्लीज टेल मी. Yes, ma'am. नाउ तो यू डोंट यू थिंक कि बाकी कंट्रीज का भी स्टे इन इंडिया पे ही फोकस करना होगा? और अगर बाकी कंट्रीज का भी फोकस करना होगा तो कैन आई से सपोज लेट्स टॉक अबाउट एन इंडिविजुअल एंड हिज नेम इज ध्रुव. It's very easy for him. Let's say he will stay 180 days in India.
30 days in UK, 90 days in USA, and etc. etc. Through ISD. मतलब through basically what I'm trying to say that it's sometimes what happens. Let's talk about the rich persons. ठीक है, बड़े लोगों के बारे में बात करते हैं. मेरा जो स्टे इन इंडिया है वो बेसिकली डिपेंड करता है, मतलब मेरा जो स्टे है वो रेजिडेंशियल स्टेटस है, वो मेरे कितने दिन में कंट्री में रहता है उससे डिपेंड करता है. बाकी कंट्रीज भी सेम ही चीजें फॉलो करती है. ठीक है, बाकी कंट्रीज भी सेम ही चीजें फॉलो करती है. तो मेरे लिए बहुत ईजी है, मैं इंडिया में से 180 दिन रहूं, यूके में 30 डेज, यूएसए में 90 डेज, बाकी दिन से ऑस्ट्रेलिया में, कुछ दिन से सिंगापुर में, राइट. इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि मैंने हर कंट्री के रेजिडेंशियल स्टेटस से मैं बच गई. अब मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूं कि आई एम नॉट अ रेजिडेंट ऑफ इवन अ सिंगल कंट्री. पॉसिबल है? डू यू थिंक पॉसिबल है? पॉसिबल है. अगर आप जानते होंगे किसी कनाडा के बंदे को भी, और अगर वो इंडिया आता है तो लिटरली वो डेज कैलकुलेट करके जाते हैं यहाँ से, और डेज कैलकुलेट करते हैं, उतना ही पीरियड रहते हैं, मुझे इससे ज्यादा नहीं रहना. मेरा एक क्लाइंट है, नेवी ऑफिसर है, लिटरली 15 दिन की छुट्टी पे भेजा है मैंने भी उसको मार्च में कि आप घूम कर आओ बाहर, ताकि रेजिडेंशियल स्टेटस ना बने. 15-20 दिन की मैंने कहा आप घूम कर आओ, बाहर ही रहो. भाई ऐसा क्यों करते हैं? 7 लाख रुपीज पर मंथ की सैलरी है उसकी. 7, जैसे मैंने अभी अपने क्लाइंट को बाहर भेज दिया, फेब में डिसाइड करके हमने बोला कि बाहर चले जाओ आप. 7 लाख पर मंथ की उस बंदे की सैलरी है. ठीक है, अगर किसी पर्सन की 7 लाख रुपीज पर मंथ की सैलरी है तो 8 महीने में वो तो 56 लाख रुपए कमा लेगा. 60-70 लाख उसने कमा लिए होंगे पूरे साल के, राइट. जस्ट बिकॉज वो 15-20 दिन एक्स्ट्रा इंडिया में रह गया, उसके 182 डेज ज्यादा हो गए, उसको पूरे 60 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा. उसको पूरे 60 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा. सो व्हाट आई विल सजेस्ट एज ए कंसल्टेंट, आई हैव सजेस्टेड हिम टू गो एंड मे बी एंजॉय सम वेकेशन आउटसाइड इंडिया. समझ में आया? तो ये भी एक पार्ट ऑफ प्लानिंग होता है, टैक्स प्लानिंग का पार्ट है ये सब. क्या है ये मेरा टैक्स प्लानिंग का पार्ट. अब ये जो बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स हैं, ठीक है, या ये जो बड़े बड़े लोग हैं बेसिकली, इनके लिए तो बहुत ईजी है किसी भी कंट्री में जाना. कुछ कंट्रीज तो हमसे भी सस्ती है. लाइक अगर आप जापान की करेंसी देखोगे तो इंडिया से सस्ती है वो जापान की करेंसी. यू विल जस्ट गूगल इट. ओके, वियतनाम, ठीक है, इतनी सारी कंट्रीज है, बाकू और ये सब, जहाँ पे करेंसी हमारी सस्ती है, मतलब हमारी स्ट्रॉन्ग है और उनकी सस्ती है, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी टू स्टे देयर. नाउ इन दैट केस इससे क्या होगा, वो बंदा कभी भी रेजिडेंट बन ही नहीं पाएगा, ना तो इंडिया में ना ही किसी और कंट्री में, क्योंकि वो हर कंट्री के लॉ जानेगा और उसके हिसाब से वहां पे शिफ्ट होना चालू कर देगा. अब सपोज करो ऐसे बंदे की इनकम ही 1 करोड़ है, तो ये तो खेल गया एक तरीके से. 1 करोड़ में से कितना खर्चा हुआ, छोटी छोटी कंट्रीज में चले गए, खर्चा हुआ चलो उससे 10 लाख का. टैक्स तो बच ही गया, क्योंकि मैं तो 30% के स्लैब में आता, सरचार्ज वगैरह पे करके, राइट. टैक्स तो बचा ही लिया काफी ज्यादा. तो ऐसे केस में ये बोला गया कि अगर कोई इंडिविजुअल है और अगर वो किसी भी कंट्री में, लेट्स से ध्रुव है, इफ ही इज नॉट रेजिडेंट इन एनी कंट्री, अगर वो किसी भी कंट्री में रेजिडेंट नहीं है, प्लस इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेस exceeds 15 lakh rupees,
plus income from Indian sources exceeds 15 lakh rupees, in that case हम ये मान लेंगे that he is deemed resident of India. हम ये मान लेंगे that he is deemed resident of India. भले ही वो रेजिडेंट नहीं है, भले ही वो उसका नंबर ऑफ डेज भी कवर नहीं हो रहा, स्टिल हम मान लेंगे कि वो डीम्ड रेजिडेंट है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें नंबर ऑफ डेज से कोई लेना देना नहीं है. क्योंकि डीम्ड का मतलब क्या होता है? मान लेना. हमने मान लिया कि आप तो हो, ठीक है, तो वो मान लेने वाला ही हमारा डीम्ड रेजिडेंट. मैम यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन, हाँ जी, अगर ये 15 लाख अगर फॉर एग्जांपल वो इंडिया में भी कमा रहे हैं, उसका फॉर एग्जांपल हम मानते हैं इन ईयर वो क्या कहते हैं 1 ईयर से ऊपर है, 15 लाख से ऊपर वो हर कंट्री में कमा रहे हैं 3 ईयर 4 कंट्री में, तो क्या अगर पॉलिसी के हिसाब से रूल कैसे, अगर 15 लाख से ऊपर कहीं पे भी किसी भी कंट्री में इनकम करते हैं तो टीम रेसिडेंट होता है फॉर एग्जांपल, तो क्या हर कंट्री के लिए उसको टैक्स एप्लीकेबल होगा, या उस फॉर एग्जांपल इंडिया में 15 लाख का कॉन्सेप्ट है, अनदर कंट्री में 20 लाख या 50 लाख का कॉन्सेप्ट है, तो क्या वहाँ पे दो कंट्री का वहाँ पे उसको रेसिडेंटशिप का उसको ये मिलेगा, टीम ये रेसिडेंस का? दो कंट्री का रेजिडेंट कोई नहीं बन पाता, ठीक है, हमेशा डिफाइन करना पड़ता है. और उसमें क्या लिखा है स्पेसिफिकली, तो मैंने बेर एक्ट की लैंग्वेज लिखी है, इफ he is not liable to tax in any other country or territory. तो अगर उसको दूसरी कंट्री में टैक्स पे करना है तो वहां पे पे कर दे, कोई दिक्कत नहीं है. बट ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल आपको मिलेंगे जो किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं पे करते बिकॉज ऑफ देयर रेजिडेंशियल स्टेटस. तो अगर दूसरी कंट्री में करे तो वहां कर दे, तब इंडिया कुछ नहीं करेगी. बट अगर आप कहीं भी पे नहीं कर रहे तो हमारे यहाँ पे आ जाए. नेक्स्ट सेशन में हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है. थैंक यू एवरीवन, प्लीज टेक केयर.